So, tried everything to reduce weight but still not lost weight? Then probably this is the nutrient which is lacking in your diet. Hi everyone, this is Dietitian Vani, and today in this video I'll be talking about one of the most important and the most neglected nutrient in our diet, which is fiber. Dietary fiber is basically the non-digestible form of carbohydrate, and it is present in all the plant sources. It is completely absent in chicken, fish, meat, poultry and dairy. Our body requires at least 25 to 30 grams of fiber per day, पर हम लोग नॉर्मली 10 से 12 ग्राम तक का ही हमारा फाइबर इंटेक होता है. फाइबर जो है हमारी बॉडी में बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, it binds with the extra fat and sugar in our body and helps to remove it through the stools, thus maintaining our weight. It binds with the sugar, it removes that sugar and also helps in maintaining the blood sugar levels. For example, जो भी डायबिटिक लोग होते हैं उनको नॉर्मली राइस अवॉइड करने के लिए कहा जाता है. But if we increase the fiber content of that rice by adding raw vegetables and eat it in a pulao form, then the fiber content gets increased, and that again still helps to manage the blood sugar level. Every 7 gram of fiber eaten daily will reduce the risk of heart diseases by 9%. फाइबर जो है हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है, उसको रिमूव करता है बिफोर इट क्लॉग्स आवर आर्टरीज. फाइबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया इन आवर गट. आवर गट बैक्टीरिया जो है दैट रिक्वायर्स सम फीड टू ग्रो, एंड दैट फीड इज द फाइबर. जितना हमारा गट बैक्टीरिया हेल्दी होगा उतना हमारा गट हेल्दी रहेगा. जितना गट हेल्दी है उतनी ही देयर विल बी प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जितनी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी उतनी ही हमारी बॉडी में लेस इन्फ्लामेशन होगी, विच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ हैविंग क्रॉनिक डिजीजेस लाइक कैंसर. ऑल्सो जितना हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन जो है अच्छे से एब्जॉर्ब होगा उतनी ही हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी. नेक्स्ट इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी proper bowel movements and then prevents the constipation. Basically, fiber is like a natural detox for our body. It soaks up all the toxins and all the potentially harmful compounds that we ingest through food and removes it out of our body. So these are the functions. फाइबर इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, इतने सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है. But the question is, how can we increase the fiber content of our diet? So fiber is basically present in cereals, whole grains, millets like ragi, jawar, bajra, oats and whole wheat. Then brown rice, whole wheat pasta, they also contain more fiber compared with the white variety. Another source is beans, peas, pulses. They are also very good sources of fiber. In fact, if you want to increase the fiber content of your diet, तो हम अपने डाइट में जितना भी सैलेड्स लेते हैं, ग्रेवीज बनाते हैं, सूप्स बनाते हैं, we can add pulses in that, and that will help to increase the fiber content of your meal. Also, you can add fresh fruits and vegetables as a side dish with your every meal. Eat more of salads, and then you can also snack on nuts and seeds. That will also increase the overall fiber content of your day. So that was all about the importance of fiber and the sources of fiber. Hope you like this video. Do like and share. Thank you.